Hello and welcome back to my channel. Today we are going to discuss regarding the counseling of a woman who came for a cesarean section to you. If a woman is previous one scar such that she had one cesarean delivery, it is mandatory for you to counsel her for vaginal birth after cesarean section, which is known as VBAC. But if a woman is previous 2 or previous 3 or so on, it is also mandatory for any doctor to counsel her for all the risk factors for the future or further cesarean section or all the risk factors for not adopting the contraceptive method, so that she can make a choice for herself on her own for her health, future and babies. To have either she need more cesarean section or adopt a contraception. It is because we see in our country that many women they go on for pregnancies to get a male heir for family. Why I'm explaining this? Because of my patient in my long case, which was the same. She was having her 4 cesarean section because of only hoping for a male heir for a family. And my examiner, she asked me to counsel her and counsel her regarding the adoption of the contraceptive method. And it is also because the women often totally negate their own health for the sake of their family pressure. And again, it is also a woman who is pressurizing her in the form of mother-in-law, etc. And the cycle goes on. Therefore, I felt necessary to take a talk about this counseling. Again, this is important session for all the doctors working out there, either junior or senior. Starting with how to counsel a lady with the previous cesarean sections, more than one, such as either 2, 3 or 4, etc. In which further cesarean section become the only mode of delivery. Again, it will be a brief intro. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर एक्स है और आपका क्या नाम है, आपकी कितनी उम्र है, आप कितना पढ़ी हुई हैं, घर पे होती हैं या कोई जॉब वगैरह करती हैं, मियाँ क्या नाम है, क्या काम करते हैं, आपके कितने बच्चे हैं और कितने ऑपरेशन से पैदा हुए हैं, सबसे छोटे की उम्र क्या है, आपका पिछला ऑपरेशन कब हुआ था, ऑपरेशन की वजह क्या थी, ऑपरेशन के बाद कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हुआ था. Now start counsel, and before tell them if they have any questions, they can stop you and can ask you. For example, we are taking here a counseling of a patient with the previous 3 scar. देखें, आपके पहले 3 ऑपरेशन हो चुके हैं और अल्लाह करे ये ऑपरेशन भी खैर खैरियत से हो जाए. आपको बुलाने का मकसद आपकी रहनुमाई करना था ताकि आप अपने लिए बेहतर फ़ैसला कर सकें. आया आपने वक्फा करना है या मज़ीद बच्चे पैदा करने का इरादा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. देखें, जिस्म के किसी भी हिस्से में ऑपरेशन करने के कुछ हदशात होते हैं, लेकिन अगर उसी जगह के ऑपरेशन बार बार किया जाए तो जानी नुकसान के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं. मिसाल के तौर पर अगर ऐसी सूरत में किसी एमरजेंसी की वजह से ऑपरेशन किया जाता है तो माँ के बच्चादानी भी निकालनी पड़ सकती है, जिसके इम्कानात हर 1000 में से 7 औरतों के होते हैं और इस वजह से ICU या इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में दाखिला करना पड़ सकता है और इसके भी इम्कानात हर 1000 में से 9 ख़वातीन के होते हैं और खुदा न खास्ता जान के ज़ाया होने का भी ख़तरा रहता है. इसी तरह बेहोशी के दौरान में इस्तेमाल होने वाली या उनकी वजह से दवाइयाँ या उनकी वजह से पेचीदगियाँ भी हो सकती हैं, जैसे कि ऑपरेशन के बाद मुसलसल सर में दर्द, BP का कम होना और अगर किसी वजह से मुकम्मल बेहोशी की ज़रूरत पड़े तो सांस की नाली में उल्टी जाने का भी खतरा रहता है. इसी तरह अगर किसी का पहले कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है तो आंवल के नीचे होने यानी बच्चादानी के मुंह पर होने के 1% इम्कानात होते हैं ये और पिछले ऑपरेशन की जगह चिपकने का भी ख़तरा होता है जो कि 11 से 14% तक होता है और ये इम्कानात बतदरीज हर ऑपरेशन के साथ बढ़ता ही चला जाता है. जैसे कि अगर पहले 2 ऑपरेशन हुए हों तो आंवल के नीचे होने के इम्कानात 1.7% और चिपकने के इम्कानात 23 से 40% तक होते हैं और अगर ये 3 ऑपरेशन हों तो नीचे होने के इम्कानात 2.8 और चिपकने के 67% तक होते हैं. अगर आंवल चिपकी हो तो इसके अपने नुकसानात हैं, जैसे कि खून का ज़्यादा पड़ना या बच्चा दानी निकालने की भी ज़रूरत पड़ सकती है.
اسی طرح ماں کو آپریشن کے بعد چھوٹے پیشاب کا انفیکشن بھی ہو سکتا ہے، جو کہ ہر 1000 میں سے ایک عورت کو ہوتا ہے، اور آپریشن کے دوران مثانہ بھی ڈیمیج ہو سکتا ہے اور چھوٹے پیشاب کی نالی بھی ڈیمیج ہو سکتی ہے، جو کہ گردے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح دوران آپریشن بچہ دانی کے ساتھ والے عضو مثلاً چھوٹی بڑی آنتیں، انڈا دانیاں اور ان کی نالیوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور یہ نقصان کے امکانات ہر آپریشن کے ساتھ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ماں کو آپریشن والی جگہ پر انفیکشن ہو سکتا ہے، جو کہ 16% خواتین کو ہوتا ہے اور مزید تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح ماں زیادہ دن ہسپتال داخل رہے تو ٹانگوں میں خون جم سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے سانس لینے میں تکلیف ہو سکتی ہے، پھیپھڑوں میں جمع ہوا خون جا سکتا ہے، جس کا نقصان جان کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ آپریشن نہ صرف ماں کے لیے خطرناک ہوتے ہیں بلکہ ان کا اثر بچوں پر بھی ہوتا ہے۔ مثلاً اگر مدت سے پہلے آپریشن ہو جائے، جو کہ ہر آپریشن میں چانسز زیادہ ہوتے ہیں، بچوں میں سانس کی بیماری جسے ہم اپنی زبان میں ٹرانزینٹ ٹیکیپنیا آف نیونیٹ کہتے ہیں، اور اس کا تناسب 38 ہفتے میں 6% ہے اور 39 ہفتے میں 1 سے 3% ہوتا ہے۔ اگر اس سے کم مدت میں آپریشن کیا جائے، جو کہ ہر آپریشن کے ساتھ بڑھ جاتا ہے، تو بچوں کے سانس کی بیماری کی نوعیت بھی بڑھ جاتی ہے، جیسا کہ ہم اس کو ریسپائریٹری ڈسٹریس سنڈروم کہتے ہیں۔ اس لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ آپ اپنے بچے بند کروائیں یا وقفہ کروائیں۔ آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہیں؟ اگر کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے دوبارہ پوچھ سکتی ہیں، میں آپ کو دوبارہ سمجھا دوں گی۔ And close your counseling again with the pamphlet, your number and any question, and follow up and say thanks. So this is it. Hope you like it. Keep practicing it and you will inshallah make through the exam. Take care till next video. Bye bye.